Hello students, myself Dr. Lakshmi Sheetal. Already in previous lecture we have studied formulas and basic example of contribution, break-even points in units, PV ratio, etc. Now we are going to solve new sum. From the following cost data, calculate break-even point in unit. Second one is break-even point in unit if selling price is reduced by 10%. Third one is selling price per unit if break-even point is 8,000 unit. Fixed cost rupees 1 lakh. Selling price per unit rupees 20 and variable cost per unit rupees 10. Firstly, calculate break-even point in unit. Then break-even point in unit if selling price is reduced by 10%. And third one is selling price per unit if break-even point is 8,000 units. Okay. Firstly, we will calculate break-even point in units. What is the formula of break-even points in unit? Okay. Write down break-even points in units equal to fixed cost divided by contribution per unit. Fixed cost divided by contribution per unit. Contribution per unit. Okay, break even point in unit equal to fixed cost divided by contribution per unit. But contribution per unit not given in sum. So we will calculate contribution per unit. What is the formula of contribution per unit? Yes, contribution per unit equal to selling price per unit minus variable cost per unit. Okay. So firstly, we will calculate contribution per unit. Okay. Contribution is per unit equal to selling price per unit. Already given in problem, selling price per unit and variable cost per unit. Formula is that contribution per unit equal to selling price per unit minus variable cost per unit. What is the price, selling price per unit? Yes, rupees 20 minus variable cost per unit rupees 10. We'll get the contribution per unit rupees 20 minus 10 rupees. We'll get the contribution per unit 10. Okay. Then you can put value fixed cost already given in problem rupees 1 lakh. Fixed cost rupees
1 lakh already given in problem 4 line. Fixed cost rupees 1 lakh. Contribution per unit, just calculate rupees 10. Will get the break even points in unit rupees 1 lakh equal rupees 1 lakh divided by rupees 10. Will get the amount 10,000 units. Got it, everyone? Then next we will solve break even point in unit if selling price is reduced by 10%. यानी जो हमारी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है पर यूनिट ₹20 वो 10% से डिक्रीज हो गई. 20 पे 10% यानी 2 यानी ₹2 से क्या होने वाली हो डिक्रीज होने वाली है. So now write down whatever a question we have asked. So first write down सेकेंड कैलकुलेशन. क्वेश्चन में हमें क्या पूछने वाला है वो फर्स्ट हमने फिर से लिख के लेने का एग्जाम में भी. ओके, व्हाट इज एवरीवन? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%. ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है? यस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमारे पास है ₹20. ओके, फिर यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹20. बट हमें क्या कहने वाला है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 10% से रिड्यूस हो गए. यानी 20 पे 10% यानी कितना आएगा? ₹2. यस, ₹2. 10% रिड्यूस हो गए. तो 20 हमारी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, उस पर हमने क्या किया 10% निकाला तो 10% क्या अमाउंट आ गई 2. तो ₹2 हम क्या करने हैं ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में से लेस करेंगे तो न्यू सेलिंग प्राइस हमें कितने मिलेंगी? ₹18. ओके, तो ये किस लिए हमने किया? हमें क्या निकालने का है? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 10%. यानी जो कुछ हमें प्रॉब्लम्स में दिए वाला है उससे रिड्यूस होके सेलिंग प्राइस जब रिड्यूस करे तो ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स कितने आएंगे ये हमें कैलकुलेट करने का है. सो राइट डाउन फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ओके, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या हो गई 10% से डिक्रीज हो गई. तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आएगा? फिर हमारे पास ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में अभी हमारे पास न्यू सेलिंग प्राइस क्या आने वाली है? ₹18 माइनस वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चेंज होने वाला है क्या? नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट एज इट इज रहेंगे. तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना मिलने वाला है? यस, ₹8. ₹8. ओके, सो राइट डाउन फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है ₹1 lakh divided by contribution per unit ₹8. Will get the break even units if selling price reduced by 10%. So break even points in units 1 lakh divided by 8 will get the amount break even unit equal to 1 lakh divided by ₹8 will get 1,200 500 units.
Got it, everyone? Then we will calculate selling price per unit if break even point is 8,000 units. Write down what is the now write down whatever a question we have asked. So now again write down selling price per unit if break even point is 8,000 units. Okay, what is the formula of break even points in unit? Break even points in unit equal to fixed cost divided by contribution per unit. Okay, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट 8,000 यूनिट. तो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो हम क्या करेंगे यहाँ पे फिल करें. So contribution per unit यानी selling price per unit minus variable cost per unit. बट हमें क्या कहवाना है कि selling price per unit निकालना है if the break even point 8,000 units है. So again write down break even points in unit equal to fixed cost divided by selling price per unit यानी sorry break even points in unit equal to fixed cost divided by contribution per unit. For how to calculate contribution per unit? So selling price per unit minus variable cost per unit, okay, divided by contribution per unit. तो मैं contribution per unit जो है उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं contribution per unit यानी selling price per unit minus variable cost per unit. Okay, so contribution per unit जब हमें लिखना है तो हम उसको फिर से डिवाइड कर सकते हैं x लेके. तो ब्रेक इवन यूनिट्स इट मीन्स कितने दिए वाले 8,000 यूनिट्स. ओके, equal to fixed cost already given in problem rupees 1 lakh divided by contribution per unit यानी selling price per unit minus variable cost per unit. तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ variable cost selling price per unit मुझे पता नहीं इसलिए मैंने x लिया वाला है x minus variable cost per unit rupees 10. Got it everyone? क्या कहने वाला है हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है जबकि ब्रेक इवन पॉइंट इज 8,000 यूनिट्स है. ओके, देन 8,000 यूनिट्स तो मैं क्या करूंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी. 8,000 यूनिट्स जो डिवाइडेड में है x माइनस रुपीज ये डिवाइड में है x माइनस x माइनस रुपीज 10. तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस में आएगा. ओके,
10 इक्वल टू, अभी फॉर्म में क्या बचेगा सिर्फ, यस, ₹1,00,000। अभी मैं क्या करूँगी, फर्स्ट इसको मल्टीप्लिकेशन करके हुए 8,000 यूनिट्स इंटू एक्स मीन्स 8,000 ओके, 8,000 एक्स, फिर से मल्टीप्लाई करूँगी 8,000 इंटू, यस, रुपीज 8,000 यूनिट्स इंटू 10, 80,000, 8,000 units into x, 8,000 x, 8,000 into rupees 10, 80,000. Okay, 80,000 equal to rupees 1,00,000. जो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 80,000, ये क्या है, माइनस में दिए वाले 80,000, x है, हाँ, ये इक्वल टू, ये जो माइनस 80,000 है रह जाएंगे तो क्या होगा, प्लस 80,000, ओके, प्लस 80,000, then 8,000 years equal to rupees 1,00,000 plus 8,000. Got it everyone? ये कैसे आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा, फिर से हम लोग क्या किए, माइनस 80,000 अगर आने के बाद क्या होंगे, वो प्लस 80,000, सो 1,00,000 plus 80,000, 1,80,000, rupees 1,80,000. ये जो है 8,000 ईयर्स, तो हम क्या करेंगे, x जो है यहाँ पे, और 80,000 इधर आने के बाद क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी 8,000 यूनिट। x यानी क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या आने वाली है, क्योंकि हमें क्या वाला है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करना है, जबकि हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स 8,000 यूनिट्स है, ओके, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 8,000 यूनिट्स, एक्स प्राइस वैल्यू क्या है हम देखेंगे, rupees 1,80,000 divided by 8,000 units will get the selling price per unit 22.50. Got it everyone?